मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट वन इंटरव्यू जिसमें मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी एंड उस दिन मेरे को ये फील हुआ कि अगर ये सारी चीज़ें मेरे को पहले पता होती तो मे बी उस दिन मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाती, बट बिकॉज आई डो नॉट नो अ मैनी ऑफ थिंग्स एंड आई डिड सो मच ऑफ मिस्टेक्स, दैट्स वाई आई कुडंट क्रैक दैट इंटरव्यू। आज मैं आपको वही गलतियां बताऊंगी जो मैंने करी थी एंड हाउ आई फिक्स देम। स्क्रीनिंग में ही इंटरव्यूअर की तरफ से मेरे लिए नेगेटिव फीडबैक होता था, दैट्स वाई मैंने अपनी गलतियों से ही काफ़ी कुछ सीखा है एंड आई शेयर ऑल ऑफ दिस थिंग्स विद ऑल ऑफ यू गाइज टुडे। एंड इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू देन दिस वीडियो विल लिटरली सेव यू। हाई एवरीवन, माय नेम इज सिमरन एंड आई एम अ जावा डेवलपर एंड करेंटली मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दे दिए हैं। कॉलेज में मैंने कम इंटरव्यूज़ दिए थे, बट मैंने अपनी कंपनी में काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड वो इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस, 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस ऐसे वाले थे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट मिस्टेक दैट एवरीवन विल डू इन द इंटरव्यू इज नॉट प्रिपेयरिंग HR क्वेश्चंस। मीन्स जो सबसे पहली चीज़ आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है वो होती है इंट्रोडक्शन एंड मैनी ऑफ द पीपल डू नॉट प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। सबसे पहले जाकर आपको इंट्रोडक्शन पूछी जाएगी एंड एट दैट टाइम यू विल बी ब्लैंक। इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पाओगे तो आगे अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर कैसे दे पाओगे। तो बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंटरव्यू को भी ये फील होगा कि यू आर नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड, तो वहीं से वो आपको जज करना स्टार्ट कर देगा। आई टेल यू माई स्टोरी। The first question that interview asked me is, tell me about yourself. And I was thinking that it is very easy, but trust me, 50% people will fail in this first question. The second mistake that usually people do is adding the things in the resume which they haven't worked on. Most of the people do this thing. Even I did this thing during the time of my interview. Most of the interviewers ask questions after seeing your resume. If something is written in your resume, they'll ask you the questions, and if you do not know the answer, then definitely it will reflect bad impression from your side to them. नाउ आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो सबको पता ही होती हैं, बट ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी चीज़ें ही डिसाइड करती हैं कि आपको ऑफर लेटर मिलेगा या फिर रिजेक्शन। द थर्ड मिस्टेक दैट आई और मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल यूजुअली डू इज़ नॉट रिवाइजिंग द थिंग्स प्रॉपरली। मैं जब अपनी लाइफ का सबसे फर्स्ट इंटरव्यू दे रही थी, देन उस टाइम काफ़ी चीज़ें मेरे से इंटरव्यू की तरफ से वो वाली चीज़ें पूछी गई जो मेरे को आती थी एंड मैंने वो करी भी थी पहले, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं वो चीज़ें भूल चुकी थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैवंट रिवाइज्ड। तो उस टाइम मेरे को ये रिग्रेट हो रहा था कि यार एक दिन था मेरे पास, 2 दिन थे मेरे पास, आई कुड डेफिनेटली रिवाइज ऑल ऑफ दैट थिंग्स, बट बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस आई हैवंट। The fourth mistake that I analyzed that most of the people do is underconfident. Underconfident not regarding speaking. First of all, it is regarding your body language. एक इंटरव्यू में मेरा जो फीडबैक आया था उसमें ये बोला गया था कि जो लड़की इंटरव्यू दे रही थी वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे सोकर उठ के आई है। तो इट इज़ body language definitely matters. Also, when you are giving interview, do not do unprofessional things like playing with your hands or doing these kind of things. I know ये हैबिट होती है कई लोगों की ऐसे हिल हिल कर चीज़ें करना, बट trust me, this is very unprofessional and most of the interviewer definitely gonna catch all these kind of unprofessional things of yours. एंड डेफिनेटली मैं स्पीकिंग स्किल्स के बारे में भी बोलूँगी कि स्पीकिंग स्किल्स वो भी मैटर करती हैं। जस्ट हाउ यू स्पीक, हाउ यू गिव योर आंसर्स, इट डेफिनेटली मैटर्स. So both body language and speaking both matters, and it is a mistake that a lot of people do. The fifth mistake that people usually do is not explaining the things properly. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ आती भी होती है, बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन द इंटरव्यूअर वट इज़ गोइंग ऑन योर माइंड। तो अगले बंदे को ये लगता है कि आपको वो चीज़ नहीं आती। तो अगर आप स्पीकिंग से मतलब बोलकर नहीं बता पा रहे हो कि वो चीज़ कैसे काम कर रही है, देन डेफिनेटली यू कैन यूज़ पेन एंड पेपर, यू कैन आस्क द इंटरव्यू फॉर दिस। वो चीज़ अलग है अगर आप HR लाइन में जा रहे हो या फिर BD लाइन में जा रहे हो, तो पेन पेपर से तो आप नहीं बताओगे ना, तो वहाँ पर तो आप किसकी
तो वहाँ पर तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स ही मैटर करेंगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सम टेक्निकल थिंग्स जहाँ पर आपकी नॉलेज मैटर करती है रादर देन आपकी स्पीकिंग। तो वहाँ पर तो आपको मतलब आप पेन और पेपर से लिख कर भी आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ दीज आर सम मिस्टेक दैट आई शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइज। बाय द वे मैं आपको बता दूं, करंटली आई एम इन अ वेरी हरी, दैट इज़ वाई मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें बता रही हूँ। मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँ, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। बट मैंने वो हाईलाइट कर दिए हैं एंड काफ़ी चीज़ें मैं टेक्स्ट भी लिख दूंगी मेरे को लगा कि मेरे से कोई चीज़ छूट गई है। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्दर थिंग्स वेयर आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू दैट व्हाट आई डिड टू improve myself in front of the interview. So first of all, for HR questions like introduce yourself or tell me your weakness, tell me your strong points, etc etc, you should मतलब रट्टा मार लो उन सब चीज़ों को। नाउ रट्टा भी कैसे मारना है, जैसे सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंट्रोडक्शन, so for introduction you know that how the things go in steps, like first step this, first step I'll tell my name, the second step is I'll tell about my graduation or my study, the third step is like what I'm telling about my projects, and fourth things like the technologies where I'm keenly interested, like these kind of things you should go step by step. And lastly, and how you end your introduction, all these things matters. So रट्टा मारने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दो जाकर ऊट पटांग, it should be like you should be professional and all the things are sorted. And the second thing that I did for improving my interview skills is change the resume according to the company requirements, but do not include the things that you do not know about. This is the biggest improvement that I did, and it is a skill actually, that how you change your resume according to the company. Work on your body language, how you move your hands, how your body looks like when you are giving interview, how your eye contact with the interviewer, and how you represent yourself in front of the interview. And I must say it definitely matters. For this thing you should watch the interviews online. It will definitely help you, and it helped me also. So that is why I'm telling you that before giving the interview, first of all watch 2-3 interviews, so it will definitely help you. Fifth point is the actually the most important point, which is try to work on your communication in the sense your explanation skills, how you explain the answer, how you explain the things to the interviewer. So for this thing you should do practice. Now for practice you can pick your friends with whom you can practice all of these kind of explanation and speaking skills. But don't worry if you do not have so much of friends, or don't worry if you feel so shy or awkward in front of others to speak. You can use AI. So currently I'm using Microsoft Copilot for all of these kind of stuffs, where Copilot will ask me the questions and I give him answers. And you can tell Copilot that what kind of questions you want to be asked. It will help you. Also sometimes for explaining the things you can use a star method. Now what is a star method? In star method, S means situation. First of all you will analyze the situation, which I mean to say that what kind of situation the interview is giving you, means actual the topic, you can say the topic on which you are going to discuss. T means task. So task means what was your responsibility or role to perform that work, what was your role. Like suppose if I am talking about a project, then during my final year this was my project, it is a situation. Now if I talk about the task, then what was your role? So for role you can say that I was team leader in my project. The third is action. Action means what you have done, what you have done to do that task. You will definitely tell all of the things in points, that what actual things you have done. R is the result, like what was the outcome. In project you can say that our project has completed within 2 months or very early, you can say. So there were some mistakes and some improvement that I did, and I 100% guarantee that these things definitely work. And I applied all these things to myself, because in college there was definitely a point where I was not ready for the interview. I couldn't even imagine that I am doing good in the interview. I couldn't imagine at that time that in my life I can give an interview, but actually I did. And all of things, I must say speaking skills is the
most important thing, that how you explain. Not speaking, I mean to say that only English matters, but not so much. Most of the things that matters are how you explaining your things. If you can't explain, you can write all of things on paper, and you can explain the things to the interviewer. Lastly, I would like to tell all of you that no one is perfect. I mean to say that even a person who have so much of experience, he also cannot know everything about the field. It might have many things about which he also do not know. So I'm trying to say that it is okay if you do not know any answer in the interview. You can easily say that I do not know the answer. Also, one more thing that I would like to tell, that you can share your current journey also. Suppose currently you are learning about to React, then you can share this thing also to your interviewer or to your HR. जिससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि yes, this person is growing and trying to do his or her best to do the great things in their life. And I would definitely say that this thing worked for me also. Lastly, I would like to tell that if you like this video, please hit the like button, subscribe button. Also share this video to your friend who according to you need this video, and tell me in the comments what kind of discussion, what kind of video you want in the next coming days. I will definitely make a video on that topic. So for now, thank you very much for watching my video, and I'll see you in my next one.